Hello everyone. Welcome back to the course on Quantitative Economics by Econiti. This is the fourth lecture of the Get Your Stats Straight series. And in this lecture, we are going to get started with the statistics of the second semester of your DO Economics honors course. Okay, so let me just show you what we are going to cover today. So this is your intermediate statistics for economics, and in the previous, like in the first semester of your economics honors course, usme you did Devore ka chapter 1 to 4 and till chapter 5, section 5.2. In the next semester, this is your syllabus, right? So you have your sampling distribution, you have estimation and inference, and finally you have hypothesis testing. So today's lecture will be a bit longish. It can be, we can overshoot, a little over an hour, but the aim is to get all of these things done together. The reason is that they do form the basis of any kind of statistical analysis that we do. And after that, once we are done till here, these things are taken, like these things are assumed that the student understands. ठीक है, तो हम इस क्लास में as usual in the previous lectures that we have done, we will focus on the concepts, we will focus on your understanding, and we will rather not get into the math and everything. एक आध जगह पे I will give you the math, but that is only to make your intuition clearer, right? So let's get right into it. All right, so this is where we are going to start. As I showed, section 5.2 तक हम already कर चुके हैं. Section 5.3 से अब we have to start. So whatever we were doing so far, right? So we were doing probability distributions, and we did a lot of named probability distributions. जिसमें हमारा assumption ये था कि कोई भी random variable है ना, whenever we were working with any random variable, either we defined what the random variable would be, right? So we said that random variable would, count the number of failures before the first success. If you count the, number of successes, it will probably say count the or look at. It will be a uniform distribution, जैसे डाई का रोल हो गया, it will be a Bernoulli trial. ये सारी चीजें हमने या तो कहीं, या फिर हमने कहा कि ये पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल है और इसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विथ द पैरामीटर्स गिवन. ठीक है ना? इन सब फॉर्मुलेशंस में द वे वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स लाइक दैट वी एग्जैक्टली नो एवरीथिंग अबाउट द रैंडम वेरिएबल, एंड द ओनली रैंडमनेस रिमेनिंग अबाउट इट इज द फैक्ट दैट कोई भी पर्टिकुलर रियलाइजेशन क्या होगा उसका जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस रैंडम वेरिएबल ने कौन सा वैल्यू लेना है. That is the only random. Other than that, we know कि इसका parameters क्या है और इसका exact probability distribution क्या है therefore. ठीक. But अगर ये सब पता ही होता तो इतना नाटक हम क्यों कर रहे हैं, है ना? हमको तो नहीं पता होती हैं ये सारी चीजें. And that is the whole point of the study of statistics and then later on econometrics. The idea is that we now do not know. Suppose हम कोई चीज स्टडी कर रहे हैं, जैसे the example that we have been working with is some characteristics about DU students, right? So in that case, suppose we are asking about, say, the weight, the height, the average scores, the satisfaction with NEP. ये सारे questions हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. We want to know about the distribution of these random variables in the population. So DU students is our population, but more often than not, we will not have information on the entire population. हमारे पास census नहीं होगा और हम sample से काम करेंगे. So as usual, the ultimate aim is कि sample का इस्तेमाल करके population के बारे में हमें we want to get a better idea. We want to make educated guesses about the population. ठीक. So now that we have understood कि अगर population में ऐसा होगा, अगर population का distribution ऐसा होगा, ये parameter होगा, तो once we know that, we will be able to make inferences about the population. But अब उसका एक previous step है that now we have to, that part is set. तो बस ये है कि अब हमें पता करना है कि population में actually में चल क्या रहा है. उसके लिए हम sample का इस्तेमाल करते हैं. So what we'll do now, we will first of all look at what a sample is.
using the terminology, using the new understanding that we have now developed in terms of random variables. ठीक है? So what we said was, of course, that sample is a subset of the population, right? Another way to look at it is that suppose you have, say, 3 samples, right? So you have DU students, right? And out of them, you have 3 samples of, say, 200 each, right? So you have 3 samples, and the size of each sample is equal to 200, right? So this is your sample 1, this is your sample 2, and this is your sample 3. And suppose the variable that you're looking at is the random variable that you're looking at. Let us say that it is the random variable h that measures the height of the particular, DU student, all right? Height in centimeter, meter, जो भी, inch, जो भी देखना चाहो. So then a way to look at, suppose that you pick the first sample, right? Now this is your serial number of observations, which will take, of course, values from 1, 2, 3, all the way till 200, right? 200 observations हर sample में, or you have 200 individuals whose height you have recorded. Suppose in the first sample, this is the value that you get, say, height ranges from, I don't know, 3 feet to 7 feet, for example. So then this is maybe 4, 4, 5, right? This is 5, 2, this is 5, 5, and so on, है ना? उसके बाद फिर तुम अगले दिन गए, तुमने दोबारा सैंपल उठाया. दोबारा सैंपल में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट यू गॉट वाज सपोज 5, 6, राइट, 6, 1, है ना, 3, 8, blah blah blah. Again, in the third sample, you went again, you picked up observation. Suppose this was 4 inches, 4 feet 8 inches. This was 3 feet, right? This was 5 feet 7 inches, and so on. So you have 3 sets of 200 observations each. Abhi, what we can do is we can look at, instead of looking at it sample wise, no, we can look at it observation wise. And we can say that this is a random variable h1. And the random variable h1, you have specified that the random variable h1 will be equal to the height of the first individual that you sample. है ना, इसमें मतलब still anonymous. The first individual can be anything. It doesn't matter who the first individual is. It just matters कि जो पहला individual है उसका जो height होगा, h1 will take that value, right? Similarly, h2 will be the random variable that takes value equal to the height of the second individual that you sample. Similarly, h3, h4, and all the way to h200, right? Now look at it कि ये जो h1 है, this is sort of, it's still the height random variable, right? Still ये height random variable है. अब इस height random variable का अपना कोई distribution होगा. अगर random variable है तो distribution है. कोई named distribution नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई distribution नहीं है. जो भी इसका distribution है, it is the distribution of height in the population of DU students. Now realize that this h1 itself is a random variable. It takes a different value every time you sample. और sample करोगे और values ले लेंगे. 4, 5, 6 and 4, 8. These are 3 realizations of the h1 random variable. Similarly, h2 भी एक random variable है. ये उसके 3 realizations हैं. Similarly, h3, similarly h4. So what you can think about a sample is कि हर sample एक collection of random variables. It is, right? All of these are different random variables. H1 is a different random variable from H2. It can be same in the sense कि H1 और H2 का distribution same हो सकता है. इस केस में होगा भी. अगर तुमने same population से जनता को उठाया है,
तो H1 और H2 और H3 और H4 H5 H6 ऑल द वे टिल 200 का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, रियलाइजेशन सेम नहीं होगा, राइट? द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द सेम, दे विल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द पर्टिकुलर रियलाइजेशन विल बी डिफरेंट, है ना? जैसे कि जो डाई रोल है, अगर डाई रोल में हर बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तुम्हारे रैंडम वेरिएबल का, इफ योर रैंडम वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू इक्वल टू द number on the die, the probability distribution every time you roll the die is the same, but the realization every time can be different. वही सेम केस यहाँ पे भी है। तो हम सैंपल को क्या बोलेंगे? हम सैंपल को बोलेंगे अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, right? And this is what this says over here. So look at it. So when we say statistics and their distribution, uh, the observations in a single sample were denoted by this x1, x2, x3. ठीक है? Consider selecting two different samples of size n from the same population distribution. DU के बच्चे, ठीक? The exercise in the second sample will virtually always differ, at least a bit, right, from those in the sample one. So for example, they've given कि first में ये, second में वो, second, third में ये. So because of this uncertainty, before the data becomes available, right, we view each observation as a random variable and denote the sample by this. Exactly what we have done. उन्होंने x कहा है, हमने h कहा है. So every sample is a collection of random variables. ठीक है? All right. So this is another way to look at the sample. अब देखो कि when you look at a sample, you can create various, things out of the sample, जिसको हम बोलेंगे statistic. जैसे कि again, let's look at this. So this is your height, right? अब suppose we are working with this sample 1. इसमें से तुम वेरियस चीजें कर सकते हो, है ना? यू कैन से डिफाइन अनदर रैंडम वेरिएबल, रिमेंबर अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तुम उस पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ फंक्शन लाइक अनदर रैंडम वेरिएबल इज, I don't know, sigma h, a random variable that is equal to the sum of all the heights. Sigma h is equal to h1 plus h2, blah blah blah. You can create another one which is a minimum of hi, जो भी height में सबसे minimum होगा, right? You can create a maximum, है ना? You can create a mean which is sigma hi upon the number of observations, which is 200. You can create a range which is max minus min. You can create a variance, right, where you apply the variance formula. So this is hi minus h bar whole square upon n. ये सारे क्या हैं? ये सारे in these are functions, or these are entities that are defined on the sample values. ठीक है? जो सैंपल, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं कि h1 से लेकर h200 तक क्या वैल्यूज हैं. हाँ, सो एनीथिंग दैट, any quantity, right, whose value can be calculated from sample data is called a statistic. ये सारे चीजों को एक कॉमन नाम दिया गया है statistic, right? When you have a sample, you can create various sorts of things out of that using only the sample values. कोई भी चीज ऐसे करके क्रिएट करोगे जिस चीज का वैल्यू सिर्फ सैंपल के वैल्यूज पर डिपेंड करे, सिर्फ डेटा पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं स्टेटिस्टिक. ठीक है ना? तो अब इंटरेस्टिंग बात स्टेटिस्टिक के बारे में क्या है कि ये स्टेटिस्टिक खुद एक रैंडम वेरिएबल है. क्यों? सपोज कोई भी स्टेटिस्टिक उठा लो. हाँ, सपोज यू स्टार्ट विथ द मिन. सपोज दिस इज वन स्टेटिस्टिक दैट यू आर वर्किंग विथ. इस मिन का एक वैल्यू होगा, सपोज यू कॉल दिस स्टेटिस्टिक लेट्स से आई डोंट नो m, statistic m, right? This m will take one value in sample 1 depending upon कि sample 1 में क्या क्या values लिए heights ने. एक दूसरा sample change करोगे value बदल जाएगी. m1, m2, m3,
ये खुद एक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि सैंपल में सारे हाइट वेरिएबल्स ने क्या क्या वैल्यूज लिए। its value itself changes with the sample. There is randomness in this value. There is, it's not a constant value. It's not something like the parameter. It changes with the sample, right? तो जिस भी सैंपल की जो भी प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, and therefore the statistic is also a random variable, है ना? तो जैसे मीन एक स्टेटिस्टिक है h bar का value will also change as you change the sample, and your every statistic is a random variable. Ultimately जो हमारा mean और variance है वो खुद भी random variable। हाँ, इसका implication क्या है? सीधा सीधा implication ये है कि अगर कोई random variable है तो कोई तो distribution होगा ही। random variable है तो उसके जो भी possible values हैं उसको there is a probability with which it will take every possible value, which means it will have a probability distribution जिसका कुछ अपना parameters होगा, ठीक है? So that the probability distribution of a statistic is called a sampling distribution. Okay, so where have they written is, so this is, I'll get to random sample in a week, sorry, in a minute, right? This is where they're showing that you can derive a sampling distribution. Basically sampling distribution derive करने के लिए इसको sampling distribution कहते हैं। ये इन्होंने कहाँ पे mention किया है? I just want to show you that. Yeah, over here. Okay, so the probability distribution of a statistic is sometimes referred to as a sampling distribution. और उसका reason ये है because it wants to emphasize that it describes how the statistic varies in value across samples. जो सैंपल सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से उस स्टेटिस्टिक का वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है ना? सो स्टेटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ऑब्वियसली अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बट इट इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू सॉर्ट ऑफ सेपरेट इट और गिव इट अ नुआंस कि उसका रैंडमनेस आता है सैंपल से rather than from the original experiment, ठीक? All right. So now the second thing is what are random samples? Now, if the sample that you have collected, जो हमारा sample है, अगर जो every sample is a collection of random variables, है ना? तो अगर ये सारे random variables जो हैं H1 से लेके H200 तक, if they are what are called IID, right? IID is independent and identically distributed. ओके, व्हाट इट मीन्स इज जितने भी एक्सेस है, जितना भी एच है, हाइट है, पहली बात वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। मतलब तुम अगर सैंपल करने गए हो और तुम्हें कह रहा है कि यू पिक्ड अप सम पर्सन एट रैंडम एंड देन दिस पर्सन सेज कि अरे मेरा भाई भी है, प्लीज उसका भी हाइट ले लो, तो वो जो भाई का हाइट तुमने उठाया ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू पिकिंग अप द सिस्टर, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पिकिंग अप द ब्रदर would have been different if you did not pick up the sister. So this is a dependent probability. इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड हो गया। एक बार तुमने बहन का कर लिया सैम्पलिंग, तो तुम्हारे भाई को पिक करने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 हो गया, है ना? क्योंकि तुम्हारी वो बहन बिल्कुल पीछे ही पड़ गई कि नहीं प्लीज 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 मेरे भाई का भी करो, ठीक? तो इस केस में दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे होगा कि तुम चले गए पहली बात तो तुमने कॉलेज के लेवल पे प्रॉब्ली एक रैंडम कॉलेजेस उठाए, उसके बाद हर में तुमने प्रॉब्ली रोल नंबर के बेसिस पे यू पिक्ड अप स्टूडेंट्स और यू जस्ट वेंट टू द एंटायर डीयू रोस्टर और उसमें से randomly you picked up 200 students. That is random. That is how every every HI becomes independent of the other. एक का दूसरे पे प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट। द सेकेंड इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आइडेंटिकली मतलब सारे के सारे वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम। हाँ, कब डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा ऐसे सोच के देखो, अगर मान लो कि तुमने पहला बंदा डीयू से उठाया, राइट, विच इज इन कॉलेज इन इंडिया,
then the second person you picked out from, say, some college in the US or some college in the Europe. Now the thing is that the distribution of heights, है ना, in India is different than the distribution of heights in Europe. हो सकता है दोनों का distribution normal हो, लेकिन on average people in Europe are taller. ठीक, सो अगर इंडिया वालों का हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, तो यूरोप वालों का हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन शायद थोड़ा इस तरफ को शिफ्टेड हो, क्योंकि उनका मीन हायर होगा, राइट? सो इवन दो बोथ आर नॉर्मल, रिमेंबर when we say identically distributed, they not only have to have the same family, they not only have to have the same family of distributions, they should also have the same parameters. सिर्फ नॉर्मल दोनों होने से काम नहीं चलेगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज द सेम मीन एंड वेरिएंस. सिर्फ सपोज बाइनोमियल होने से काम नहीं चलेगा. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, जो उसके दो पैरामीटर्स हैं. ठीक, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि तुम डीयू से ही उठाओ और उसी साल में बिल्कुल ही उठाओ. हाँ, अगले दिन, मतलब द गैप हैज टू बी वेरी स्मॉल, सो दैट ऐसा ना हो कि मतलब एक 1980s में उठाया और दूसरा फिर 20 साल बाद उठाने चले. अगेन नॉट द सेम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, सो देन दिस इज व्हाट इट इज सेइंग ओवर हियर, दैट द RVs whatever x1 to xn are set to form a simple random sample of whatever size if the xi's are independent, pehla I, and every xi has the same probability distribution, dusra I. IID, independent and identically distributed, right? So we usually work with samples that are IID because most of the ideal properties that we would like to apply work with IID. तो शुरुआत हमेशा ही आइडियल केसेस से करते हैं जहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग हो इस केस में, एंड देन वी एक्सप्लोर इन लेटर ऑन केसेस वेयर दिस assumption may not hold, जो कि हम इस कोर्स में करेंगे, बट पहले आइडियल क्या है उसको स्टडी करेंगे. ठीक, all right. So deriving a sampling distribution is something, you just take different samples and then you calculate whatever, suppose mean हो गया, variance हो गया, range हो गया, हर sample के लिए collect करो, उसके बाद हर sample के लिए वो value calculate करो, उसके बाद जो भी उसका probability है वो plot करो. And it's just like plotting a histogram, and you do the repeated sampling enough number of times, you will have yourself a probability distribution. All right, cool. So now simulation experiments, we don't have to worry about. All right, so now we will get to the most important part, which is the distribution of the sample mean. ये सबसे important है और ये सबसे interesting और powerful result है. इसी के तहत we study what is called the Central Limit Theorem. And this result is extremely powerful, and this result forms the basis of the entire inference and estimation and hypothesis testing. Okay, sorry, inference and hypothesis testing. So let's see what, first of all, कि result कहना क्या चाहता है. We have a lot of statistics that we can define on a sample. हर स्टेटिस्टिक एक रैंडम वेरिएबल है, बट सैंपल मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल है. और हम इसके बारे में वी आर गोइंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एसेंशियली गिव्स अस के सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉट ओनली द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट दिस सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द प्रोपोजिशन. ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं है, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का पार्शियल वर्जन है. आई विल कम टू द एंटायर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बट पहले ये समझ लेते हैं. ठीक, वी विल नॉट डू द प्रूफ, वी विल ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड के एसेंस क्या है इसका. पहला प्रोपोजिशन ये है. प्रूफ एक्चुअली बहुत सिंपल है, जस्ट यूजेस द लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन. यू कैन जस्ट रीड इट, है ना, डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, so what this proposition says is that this is a random sample x1 to xn, right? It's a random sample from a distribution, and we are saying that we suppose distribution का कुछ mean और variance known है, unknown है, उससे अभी फर्क नहीं है. suppose के known ही है. for your understanding, suppose के तुम ने actually
2-3 दिन पहले ही पूरा डीयू का सेंसस किया था, और उस सेंसस में तुम्हें डीयू का एक्चुअल हाइट का मीन, राइट, योर रैंडम वेरिएबल इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन डीयू, सो यू हैव गॉट टू नो कि एक्चुअल में हाइट मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हाइट क्या है डीयू में, एंड वेरिएंस क्या है। ठीक है, उसके बाद तुम 2 दिन बाद उठे, तुम्हारा सारा मतलब यू नो लॉस्ट ऑल मेमोरी, तुम्हारे साथ गजनी वाला मजाक हो गया, एंड देन you realize कि okay, you don't know anything about the sample, about the population, and now all you have is your statistical power. तो अब उसको लेके तुम्हें काम करना है। तो अब क्या, सपोज कि तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हें पता है कि कुछ तो है, सो उसका कुछ मीन वैल्यू है म्यू, ठीक, एंड कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा या वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। So then this proposition says that if the random variable or if the sample, random sample जो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, उसका तुम मीन निकालोगे, सैंपल मीन, तो वो सैंपल मीन जो है, the expected value of that sample mean will be equal to the expected value of the underlying random variable। इसको समझते हैं, और ये कितना पावरफुल है इसको भी समझते हैं। सपोज मैंने क्या कहा कि ये तो तुमने सैम्पलिंग के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया है ना, अब असल में क्या होगा कि तुम्हारे पास होगा तो एक ही सैंपल, हर दिन जा जाके तो कोई सैम्पलिंग करता नहीं है, कोई तुम्हें बताएगा भी नहीं, तो तुम्हारे पास एक ही सैंपल है, ठीक। सो अब क्या बात है कि व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सपोज द हाइट, राइट, जो रादर हाइट वेरिएबल है, जो पूरे डीयू की हाइट वेरिएबल है, राइट, मीन हाइट of all DU students, which is the population, right? Mean height of all DU students is suppose 5 feet 5 inches. This is your mu, ठीक है। अब जब तुम ऐसे रिपीटेड सैम्पलिंग करोगे, है ना, इफ यू कुड सपोज यू कुड डू दिस रिपीटेड सैम्पलिंग, जब ये रिपीटेड सैम्पलिंग करोगे तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट H1 आएगा, सॉरी H1 बार आएगा, H1 बार, H2 बार, H3 बार, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर तुम ये सैम्पलिंग मल्टीपल टाइम्स करते जाओगे, हाइपोथेटिकली इफ यू कीप ऑन डूइंग रिपीटेड सैम्पलिंग मल्टीपल टाइम्स, तो ये सारे जो हाइट, एवरेज हाइट्स आए हैं ना, उनका जो मीन होगा, मीन ऑफ द मीन, दिस विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ द एक्चुअल अंडरलाइंग वेरिएबल। मतलब जो हाइट के मीन का एक्सपेक्टेशन होगा, वो हाइट का ही एक्सपेक्टेशन होगा, इन दिस केस 5 जब ये सारे हाइट्स का तो मीन लेते जाओगे हर सैंपल में से, और वो सारों का मीन प्लस करके डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन दिस सैम्पलिंग, उसका जो वैल्यू आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू वो म्यू जिसकी तलाश में तुम निकले थे। तुम इसकी तलाश में नहीं निकले थे, तुम्हें मीन का मीन नहीं चाहिए था, तुम्हें ट्रू मीन चाहिए था अंडरलाइंग वेरिएबल का, जो कि था हाइट, राइट, वो ये था, बट ये मीन का मीन निकाल के तुम इस मीन तक पहुंच गए। दैट इज अ वेरी पावरफुल रिजल्ट। ओके, so this is saying that the expected value of the sample mean is the true population mean of the variable, the random variable, the underlying random variable. All right, ये है first part. And the second part is which is about the variance, कि ये जो वेरिएंस है, मीन तो वही है, दोनों का मीन एग्जैक्टली सेम है, और जो वेरिएंस है, इफ द वेरिएंस ऑफ the height variable is sigma square, then the variance of the mean height variable is sigma square by n, ठीक। n क्या है, सैंपल साइज है, इसका मतलब कि तुम जितना बड़ा सैंपल लोगे उतना ज्यादा वेरिएंस कम होता जाएगा, and उतना ज्यादा the chances will be that you will actually land at the sample mean. Okay, so remember, इसमें मैं एक चीज कह रही हूँ, एक चीज नहीं कह रही हूँ। एक चीज जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि इन एक्सपेक्टेशन, मतलब ऑन एवरेज
दिस विल बी इक्वल टू दिस। मैं नहीं कह रही हूं कि हर एक वैल्यू एच बार की इक्वल होगी, ऑफ कोर्स नहीं होगी। हर एक वैल्यू मीन के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह मीन की हर एक वैल्यू मीन के इक्वल नहीं होगी, ऑलराइट। बट इफ योर सैंपल साइज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, तो ये मीन से जो उसका डिविएशन है ना, जो प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से अलग होगा, वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, उसका वेरिएंस कम होता जाएगा, ऑलराइट। सो इट विल बिकम मोर एंड मोर प्रोबेबल कि वो वैल्यू 5 के अराउंड ही लाई करेगी, राइट। Another powerful point about the result. So if you have any sample of size n, तो उसमें उसका पहली बात तो अगर तुमने साइज n का सैंपल लिया तो उसमें जो मीन है इन एक्सपेक्टेशन दैट विल बी इक्वल टू दी मीन ऑफ द अंडरलाइंग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और उसका जो वेरिएंस है दैट विल बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल डिवाइड बाय n। तो जितना बड़ा n उतना कम वेरिएंस, ऑलराइट। सो be careful that whenever we are talking about the expectation and variance, we are essentially thinking in terms of repeated sampling, कि जब sampling repeat करोगे तो on average you will be getting the true mean, right? And if you have a bigger and bigger sample, then on average your chances of being wrong or away from the mean will become smaller and smaller and smaller. So अगर तुम 200 के सैंपल की जगह सपोज 2000 के सैंपल लेने चले जाओ, तो कोई भी पर्टिकुलर सैंपल में भी तुम्हारा वेरिएंस, मतलब तुम्हारा चांस ऑफ नॉट बीइंग इक्वल टू द 5 वाला फिगर विल बी मच मच लेसर, राइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये इस केस में ये कह रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई विल गिव यू द मोर जनरल रिजल्ट itself. This is the central limit theorem. Okay, let us go through the theorem and then understand कि वो क्या कह रहा है. So suppose x1 और x2n कोई random sample है and it is from a distribution. Random sample है मतलब IID है, और distribution का कुछ अगर mean और variance है. Then if n is sufficiently large, मतलब you have a large enough sample, right? X bar has approximately a normal distribution जिसका मीन हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है, म्यू है, और वेरिएंस भी हमने निकाल लिया है, राइट। सो व्हाट दिस इज सेइंग कि नाउ वी नॉट ओनली नो द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वी एक्चुअली नो द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट वाले के केस में ही करते हैं, फिर हम और जनरलाइज करते हैं। सपोज के जो डीयू के बच्चे हैं उनका हाइट लाइज ऐसा, उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। This is the distribution of heights. Now what you do is, इसका कुछ mean है mu. Now suppose you take a sample of, suppose n1 is equal to say 50, n2 is equal to 100, n3 is equal to say 500. All right. Then if your n1 is equal to 50 और तुमने 50 का सैंपल लिया है, 50 बच्चों का, तो क्या होगा कि जो उसका मीन है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? रिमेंबर कि मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब कि वी आर थिंकिंग कि हर बार सैंपल लोगे तो एक नया तो एक नया वैल्यू आएगा, राइट। सो वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिपीटेड सैम्पलिंग। बट द पॉइंट इज कि इतना रिपीटेड सैम्पलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज स्टेटिस्टिकली प्रूव हो चुकी है, तो तुम एक ही सैंपल से काम चला सकते हो। तो अब क्या प्रूफ हुआ है स्टेटिस्टिक्स में, क्या बात है, क्या यूज कर सकते हैं, वो ये है कि अगर 50 का सैंपल है ना, तो मीन तो हमने पहले कह दिया कि सैंपल मीन का मीन म्यू ही होगा, और उसका वेरिएंस 50 के फैक्टर से कम हो जाएगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर एच बार का डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन यू हैव अ सैंपल ऑफ 50,
इफ यू हैव अ सैंपल ऑफ 100, वेरिएंस और कम हो जाएगा. This is your H bar with a sample of 100. And if you have a sample of 500, ये ऐसा हो जाएगा. You see what happens? Suppose तुम DO के बच्चों का हाइट लेने के लिए 500 बच्चों का सैंपल उठाते हो, then the probability of mean height, the probability distribution of mean height will be the red one, which means के maximum it can deviate from the mean. मैक्सिमम तुम जो गलत हो सकते हो वो बस इतना है, कुछ इतना ही. मैक्सिमम प्रॉब्ली इतना. You pick a big enough sample, central limit theorem ensures, it ensures कि तुम्हारा mean is very close to the true population mean जिसकी तलाश में तुम निकले थे. This is the power of the central limit theorem. It not, and we will look at how the distribution is helpful for us. ये inference में काम आएगा, but अभी के लिए sample size का importance है. तुमने और इतना 500 चाहिए भी नहीं. If your sample is 500 चाहिए for reducing the variance, right? But imagine व्यू में thousands of students हैं, right? अगर तुमने 500,000 बच्चे भी ले लिए तो भी you will be very close to the actual population mean. And this is what you wanted. You want to get a very good estimate of the population mean. उसके लिए तुम एक सैंपल उठाओ. सैंपल का जो मीन होगा by results in statistics in probability, it tells you कि तुम्हें बार बार सैम्पलिंग करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा एक सैंपल ही, one large enough sample is good enough. It will give you very accurate results. This is the central limit theorem for you, right? Okay, so now that we have understood the central limit theorem and what it says, this is the second power of the central limit theorem. इसमें हमने क्या कहा कि हमारा जो हाइट है, हमने क्या अज्यूम किया कि हाइट भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉट नेसेसरी. तुम्हारा अंडरलाइंग वेरिएबल जो भी हो, सपोज अंडरलाइंग वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. अंडरलाइंग वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और ये कुछ मीन है, फिर भी सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा. सपोज अंडरलाइंग वेरिएबल है तुम्हारा बाइनोमियल है, राइट? और बर्नौली है. Bernoulli is easier to work with. Suppose it is Bernoulli, which means that it can take only two values, 0 and 1, right? And the probability of success is probably say 0.6. So it takes this value with 0.6 probability. Right? This is 0.6, इस वाले बार का हाइट और इसका 0.4 है. ये है तुम्हारा अंडरलाइंग वेरिएबल एंड द मीन ऑफ दिस इज व्हाट? द मीन इज 0.6, है ना? मीन ऑफ अ बर्नौली इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इसके भी अगर तुम यू टेक अ लार्ज इनफ सैंपल, उसका जो मीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही होगा. It will always have a normal distribution around the sample, around the true population mean. Isn't that powerful? Isn't that wonderful? Right? Okay, चलो. So अभी देखो, rule of thumb, if n is greater than 30, CLT can be used. 30 is such a small number. Think about it, right? So इतना भी बड़ा sample नहीं चाहिए, but जितना बड़ा उतना बेहतर. Okay, then other applications and all is fine. Distribution of a linear combination, you can skip it for now. All right. So now we have finished और we have understood के मीन का, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और एग्जैक्टली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसके पैरामीटर्स भी हमको पता है. तो अब हम अपने असली धंधे पे आ जाते हैं जहां पर हम एस्टिमेशन करेंगे. ठीक. सो वी नो के मतलब वन वे टू, मतलब हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन मीन का एक एस्टिमेट है, मतलब वन वे टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन इज द सैंपल मीन, है ना? बट उसको और रिगरसली समझते हैं.
All right. So this is done by what is called point estimation. Or point estimation is basically where your estimate is just a number. As opposed to what we will do after this is interval estimation, जहाँ पे we don't say कि suppose mean का मेरा estimate is say 5.7, we say that mean can lie between say 5.3 to 5.8. तो उसको एक interval बोलेंगे, हम एक range देते हैं. First of all, we will begin with point estimation, जहाँ पे हम सिर्फ एक number देंगे. All right. Some concepts what they are talking about is what is the estimate. ठीक है, हमने क्या बोला था, एक statistic क्या होता है? Statistic is basically any quantity that is defined only on the sample values. ठीक है ना? तो statistic कुछ भी हो सकता है. हमने बहुत सारे किस्म के statistics define किए, और जो हमने define किए वो काफी logical भी थे, but logical नहीं भी हो सकते हैं. Yeah? तुम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो. सपोज यू जस्ट से द सम ऑफ द फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशंस, है ना, यू कैन डिफाइन एनीथिंग. द थिंग इज दैट इन फालतू स्टैटिस्टिक्स को काम के स्टैटिस्टिक्स से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? द ओनली थिंग इज दैट इफ यू हैव अ स्टैटिस्टिक दैट हैज ए पर्पस, दैट इज एन एस्टिमेटर. ठीक है ना? अगर तुम्हारा सैंपल मीन एक स्टैटिस्टिक है और यू आर यूजिंग द सैंपल मीन टू मेक अ गेस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, तुम्हारा वो स्टेटिस्टिक एक एस्टिमेटर बन जाता है, उसको एक गोल मिल जाता है. ठीक, सो दैट इज योर एस्टिमेटर. एज बिफोर, जो एस्टिमेटर है, क्योंकि वो स्टेटिस्टिक है, वो एक रैंडम वेरिएबल है. और जो एस्टिमेट है वो उस रैंडम वेरिएबल का एक पर्टिकुलर रियलाइजेशन है एज सून एज यू गेट दी सैंपल. जैसे ही सैंपल आ गया तो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज कंडेंस हो गई. ठीक, whatever were the different possibilities, they condensed into some actual numbers. और वो जो एक्चुअल नंबर्स को सम और डिवाइड करके तुमको मीन मिला, वो है द एस्टिमेट, द पॉइंट एस्टिमेट. ठीक, एंड वंस यू आर इन द रेल्म ऑफ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तब तुम एस्टिमेटर की बात कर रहे हो, जब तुम्हारे अंदर जब द रैंडमनेस इज स्टिल देयर. ओके, all right, so this is your estimate, and we will denote parameter by some theta. और estimate as different estimators को कैसे denote करेंगे? So your parameter will be theta, or you can suppose say theta hat, theta tilde, right? Theta, I don't know, prime. Theta prime actually नहीं, कुछ और लगाते हैं यहाँ पे. मान लो के theta say double hat. Some you use various math symbols, so you can have different things. Suppose mean हो गया, तो you can have things like कि theta hat is where you sum the sample values and divide by n. Theta tilde is where you sum the sample values, right, and instead you divide by n-1 for some reason. कर तो सकते हो ना, फ्री विल है, कौन रोक रहा है? ठीक, सपोज theta double tilde is where you look at the mid value, मीडियन देख लेते हो, एंड यू सी कि चलो मेरा मीडियन होएगा मेरा एस्टिमेटर. कुछ भी हो सकता है. सो माय पॉइंट इज कि इवन दो वी जस्ट लुक एट सैंपल मीन, सो नेचुरली हमको इतनी आदत हो गई है कि भाई पॉपुलेशन मीन है तो सैंपल मीन से ही निकलेगा. जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. यू कैन हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. सिमिलरली जैसे वेरिएंस के लिए तुम n से डिवाइड कर रहे हो या n-1 से डिवाइड कर रहे हो, ये दो एस्टिमेट्स होते हैं, और उनमें से एक हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं अनबायस्डनेस. ऑलराइट, सो लेट अस लर्न व्हाट अनबायस्डनेस इज. अब क्या काम है ना कि भाई हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं ना, चॉइसेस हो सकते हैं कि वी टोल्ड यू दैट सैंपल मीन को लेके तुम वो एस्टिमेट करो पॉपुलेशन मीन को, बट क्यों, क्या रीजन है, क्या खास बात है सैंपल मीन में, या क्या खास बात है, या क्या वो क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी एस्टिमेटर में जो उसको खास बनाए, जो उसको बाकियों से इट मेक्स यू चूज इट. So one of those quality is what is called unbiasedness. And unbiasedness is a quality when a point estimator, right, is said to be unbiased if
unbiased estimator of whatever theta of course, if its expected value is actually equal to theta. और इसका रीजन क्या है कि हमको ये चाहिए कि जो भी हम एस्टिमेटर लें, हमको पता है कि उसका वैल्यू कभी भी एग्जैक्टली थीटा के इक्वल तो नहीं होगा, है ना. इसका दैट इज एन that's a stupid expectation, right? Things are random over here. So it is very unlikely, it's extremely unlikely that you will get a value of a sample mean that is actually equal to the true population mean. और अगर ऐसा होगा भी तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें ट्रू पॉपुलेशन मीन पता ही नहीं है. लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि कम से कम हम स्टेटिस्टिकली ये बात प्रूव कर सकें कि ऑन एवरेज दिस एस्टिमेटर गिव्स द करेक्ट रिजल्ट. ऑन एन एवरेज वो हमारे डिजायर्ड वैल्यू के इक्वल. हम कभी भी मल्टीपल सैम्पल्स हार्डली, स्पेशली इन सोशल साइंसेस लाइक इकोनॉमिक्स, जैसे कोई सैंपल हुआ एनएसएस का, आईएचडीएस का, सैम्पलिंग होता है 5 साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, मे बी कुछ कुछ फॉर सम सर्वेज, राइट. कौन वो मल्टीपल टाइम्स करेगा? एक एक सर्वे में ही 6-8 महीने लग जाते हैं. बाय द टाइम यू गो बैक योर पॉपुलेशन वुड हैव चेंज, नो, योर डिस्ट्रीब्यूशन वुड हैव चेंज्ड, राइट. प्लस इट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली. तो हमारे पास जनरली एक ही सैंपल होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम उस एक सैंपल से, मतलब we are really sure about that sample, we have some results with us that make this one sample enough, and we of course collect sample in a way जिसमें कि हम रिजल्ट के लिए जो भी assumptions required हैं वो सब satisfy कर सकें. That is fine, but the thing is that whatever sample you have, that sample should be enough, and that is why we want these results, ताकि हम sample में faith डाल सकें. एंड द रिजल्ट्स आर एक्चुअली देयर. ये सब नेचुरल रिजल्ट्स हैं जो हमने डिस्कवर किए हैं, ठीक. सो दिस इज सेइंग दैट वी वांट एन एस्टिमेटर जो ऑन एन एवरेज हमको सही जवाब दे, जो चाहिए वो दे. ऐसा ना हो कि मतलब ऑन एन एवरेज वो कहीं और ही जा रहा है, हमेशा ही वो एवरेज. सपोज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर एस्टिमेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा, तो इस केस में तुम कभी भी करेक्ट होने की उम्मीद कर नहीं सकते. तो व्हाई विल यू चूज दैट? यू विल नॉट चूज दिस, right? If you have an unbiased, if you don't have an unbiased estimator, if theta hat is not unbiased, then the difference, ये जो difference है, this is called bias. ठीक है? So ये bias का definition है. Okay, that's one quality कि वो unbiased हो. And then the second quality is about the variance. तो unbiasedness तो ठीक है, लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास दो एस्टिमेटर्स हैं, ये तुम्हारा म्यू है और दोनों के दोनों अनबायस्ड है, राइट. बट एक का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है और दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, तो इस वाले के साथ जाओगे ना. दिस इज व्हाट यू विल वांट टू डू, क्योंकि ऑल्दो ऑन एवरेज बोथ ऑफ देम विल बी करेक्ट, दोनों का मीन है, दोनों अनबायस्ड है, लेकिन फिर भी इस वाले के चांसेस हायर हैं. इस वाले के चांसेस हायर है क्योंकि इसका वेरिएंस कम है. कोई भी वैल्यू आएगी वो यहाँ तक ही आएगी, प्लस इसके अराउंड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है. यू आर एक्सपेक्टेड टू बी करेक्ट or closer to what you are trying to discover if you go with this rather than when you go with this. All right. Okay, so that is estimator. So this is a principle, although not so much of a principle. This is something that we usually want, that among all estimators of theta that are unbiased, usually we should choose the one that has minimum variance, and this is called the minimum variance unbiased estimator, or MVUE. All right. Then yeah, so they've discussed some complications. We don't need to get into that. This is something that we'll come to later जब हम interval estimation करेंगे. Okay, so now we have to just quickly go over कि methods of point estimation क्या थे. दो methods थे, है ना, method of movements and maximum likelihood estimation. ठीक है, कई बार दोनों methods same answer देते हैं, कई बार नहीं देते हैं. Usually we go with the one that is unbiased, and if both are unbiased we will choose the one जिसमें के variance कम.
ठीक है। सो पॉइंट एस्टिमेशन में जो मेथड ऑफ मोमेंट्स है उसमें द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आई एम अगेन नॉट गोइंग इनटू डिटेल, थोड़ा सा डिटेल हम तब करेंगे जब हम रिग्रेशन में व्हेन वी विल डिराइव दी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के एस्टिमेटर्स। बट राइट नाउ व्हाट दिस इज सेइंग इज, एक होता है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन है तुम्हारा। सो दीज आर, if you sum xi, right, and divide by n, this is your first moment. If you sum xi square, मतलब पहले तुमने xi लिया, उसको हर एक xi को स्क्वायर कर दिया, उसका सम लेके डिवाइड किया, सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट. If you sum xi, right, but you raise the xi to the kth power every xi, and then you take the average, this is the kth population moment. All right. So not exactly like summation, basically the expected value, as you can see over here. So whenever we talk about population, we will talk in terms of expected value, and whenever we talk in terms of the sample, हम sample mean और इसकी बात करेंगे जब वहाँ पे हम summation वगैरह लगाएंगे, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि expected value is sort of like the true population mean, और sample mean हमारा सिर्फ sample तक limited होता है. So this is your kth moment of the distribution is given by the expectation of x raised to the power k, right? And the sample moment is where you take x to the power k, sum it up and divide by n. All right. So then using the method of moments, what you do is you equate population moment with the sample moment. All right. तो अगर तुम्हें दो पैरामीटर्स चाहिए तो तुम फर्स्ट टू मोमेंट्स को इक्वेट कर देते हो, एंड देन यू हैव टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स एंड यू सॉल्व फॉर द अननोन्स. राइट. तो एक जस्ट फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं. जस्ट I mean, it may do something for you, it may not, but I'm just doing the example to show you the contrast with MLE, maximum likelihood estimator. So suppose again you have this random sample of services of n customers, right, at a certain facility. Underlying distribution is assumed to be exponential, right? So exponential wala kya tha? Exponential was basically saying yeah, so exponential distribution का हमें पता था कि उसका जो भी पैरामीटर है वो लैम्डा है. Don't worry about it, just assume कि उसका एक पैरामीटर लैम्डा है, और then since there is only one parameter, तो हमको सिर्फ फर्स्ट मोमेंट्स को इक्वेट करना है. अब फर्स्ट सैंपल मोमेंट क्या है? x बार है ना, ये रहा फर्स्ट सैंपल मोमेंट. और फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट क्या है? द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, which is in this case, in case of exponential, we have already done, मतलब we have not done but you have done in the book previously, कि वो 1 upon lambda है. ठीक है ना? तो अब सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करना है. So your x bar is equal to 1 upon lambda, and therefore an estimate for your lambda, an estimator for your lambda will be whatever mean you get, you take its reciprocal. Okay, so जो भी इसका mean आएगा, when you take its reciprocal, that will be a method of moment estimator of the population parameter, which is lambda. All right. Now, the maximum likelihood estimation, this is a very intuitive method, जिसका मैं सिर्फ intuition ही समझाऊँ. The maximum likelihood estimation is basically saying कि suppose, of course, कोई population है और हमने उससे कोई sample उठाया है. अब हमें क्या दिख रहा है? हमें सिर्फ sample दिख रहा है. What will be the best estimate of the underlying population, underlying distribution and its parameters? The best estimate would be that जो भी पैरामीटर वैल्यूज है, इसमें यूजुअली हम ये अज्यूम करते हैं कि हमको मतलब फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है. हमको पता है कि वो एक्सपोनेंशियल है, हमको पता है कि वो नॉर्मल है, हमको पता है कि वो बर्नौली है, बाइनोमियल है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट हमको ना वो पर्टिकुलर मेंबर नहीं पता उस फैमिली का. मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ उसका पैरामीटर वैल्यू नहीं पता है जो हमको एस्टिमेट करना है. ठीक. So given the description of the random variable, usually you will be able to make out कि उसका distribution का family क्या है, लेकिन exact parameter क्या है वो निकालना काम है. Okay. So then what we have is that
you have a sample, right? And you are thinking कि भाई ये sample तो मेरे पास है इस प्रकार, मतलब this is the family of distributions. वो कौन से parameter values होंगे which will make this sample the most likely? Suppose you have two set of parameters, the parameter values, है ना? एक बार तुम्हें लैम्डा 1 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन लैम्डा 2. तो अगर लैम्डा 1 एक ऑप्शन है और उससे इस सैंपल की आने की प्रोबेबिलिटी है से 70%, अगर लैम्डा 1 सही में उसका सही में अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है, then the probability with which you can get the current sample that you observe is 70%. And the same probability, right, of getting the sample with lambda 2 is actually 90%. तो ये ज्यादा likely है ना कि lambda 2 ही रहा होगा सही. Lambda 2 would be the correct parameter, right? So now instead of lambda 1 and lambda 2, you look at all the possible lambdas that there can be. ठीक. और तुम जो सैंपल के लाइकलीहुड है ना, यू हैव द सैंपल जिसका एक लाइकलीहुड है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है उससे तुम एक लाइकलीहुड फंक्शन निकालते हो. वो लाइकलीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हो विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, और उस पैरामीटर का जो भी वैल्यू उसके लाइकलीहुड को मैक्सिमाइज कर दे, दैट इज योर मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट. वही होगा क्योंकि उसी से जो सैंपल मिला है वो मिला है सबसे ज्यादा लाइकलीहुड के साथ मिला है. अगर कोई और वैल्यू लेते हो तो इस सैंपल के मिलने की संभावना कम थी. So then it makes sense to go with this one. Okay, so this is the idea. So if you assume IID sample, तो ये चीज और easy हो जाती है क्योंकि then again look at this. So then you can just multiply individual probabilities, है ना? Independent है तो the joint probability, याद करना, independent है तो joint probability is simply the product of individual probabilities, right? So this is the same sample from an exponential distribution and we are again saying कि parameter lambda है. अब इसका maximum likelihood estimator क्या होगा? Based on independence, like because of independence, likelihood function होगा. What is the probability that the first value was equal to x1, second x2, third x3, 4x4 and so on? Probability that, you know, x, the random variable takes a value equal to x1 times सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए. एक लाइकलीहुड फंक्शन मिल गया, इसको तुमने मैक्सिमाइज किया लॉग वगैरह लगा के विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा. व्हाट यू गॉट वाज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन x बार. ओके, सो दिस इज आइडेंटिकल टू द मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेटर. इस केस में दोनों सेम ही मिल गए. Alright, so these are your two ways to estimate, and the good thing about the MLE is that under very general conditions, okay, the joint distribution of the sample, when the sample size is large, then the maximum likelihood estimator for any parameter is approximately unbiased, right, and has either a minimum variance, right, or nearly as small as can be achieved by any estimator. So, you know, this is in general a minimum variance unbiased estimator. इसीलिए हम MLE को इतना value देते हैं. But MLE is difficult to calculate in a lot of cases, especially if you don't have a random sample. All right. So now let us get to statistical intervals, basically interval estimation. All right. Okay. Okay. So अब तक we were dealing with the point estimates, but point estimate जितनी precise क्यों ना हो कि तुम बोल दो उनको कि भाई my you know estimate for the mean is, and sorry, I forgot to mention, we have already proved that the sample mean is an unbiased estimator. All right. So at least वो test तो pass हो जाता है. It is also the minimum variance estimator. ठीक है. All right. So we do have an unbiased estimator, and we also know कि भाई वो है minimum variance. लेकिन फिर भी हमको पता है कि sample mean हमेशा रहेगा तो एक random variable, तो हमेशा एक uncertainty तो रहेगी ही हमेशा. It will be the case that it will usually in almost all the cases not be equal to mu,
right? So we want to incorporate this uncertainty, this variability, this inherent variability in the value of any estimator, in the value of, for example, the sample mean. तो उसके लिए हम एक इंटरवल एस्टिमेटर यूज करते हैं, विच इज बेसिकली एन अपर एंड लोअर लिमिट अराउंड योर पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक, जो कि ये एंश्योर करे, right? So what is the kind of language that you hear? You hear that I want a 95% confidence interval बोलते हैं उसको. I want an interval, so this is the language that you use. I want an interval around the mean that contains the true population mean with 95% probability. ठीक, इसका क्या मतलब है? That the amount of confidence I want to have in this interval is 95%, है ना? मतलब कि अगर मैं repeated sampling करूं hypothetically, right? Statistically, it should be the case that in 95% of those cases, the true population mean belongs in the interval. मतलब वो interval ऐसा हो, याद रहे population mean fix है, population mean एक पैरामीटर है, वो एक कांस्टेंट है, right? It is somewhere out there, right? It is mystical that ways. कहाँ है क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक that's the truth, और उस सत्य की तलाश में हम निकले हैं. तो अब हमको एक ऐसा इंटरवल चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंट हों कि 95% ऑफ द टाइम्स इट विल कंटेन द ट्रू वैल्यू. ठीक है, so maybe phrasing it like this will be helpful. If we say that 95% of the times the true value will lie in it, it's kind of places the burden on the true value, but true value हिल नहीं रहा है, true value उतना ही है, burden तुम्हारे confidence interval पे है. तुम्हें इंटरवल ऐसा बनाना है जिसमें कि जो इंटरवल कंटेन कर ले उस ट्रू वैल्यू को in say 95% of the times. All right, so this is called a 95% confidence interval, and this is what we want. So what we want is, so say a 95% confidence interval. This is what? This is an interval in which the probability that the true mean, we'll work with the example of the mean, it's more intuitive, it's tractable also. So we are saying that the true population mean belongs in this confidence interval with a probability of 0.95. ठीक, so what are we saying is, हमने confidence interval तो x के अराउंड ही बनाना है, x बार के, कोई x बार हमको मिल गया है ना, x बार हमको एक वैल्यू मिल गई है. अब इसके अराउंड हमने एक इंटरवल बनाना है, एक सिमेट्रिक इंटरवल बनाते हैं यूजुअली. सो सपोज कि हमने x बार में से कुछ कांस्टेंट माइनस किया, अगर x बार 5 है तो मान लो कि कांस्टेंट हमने माइनस किया 1, राइट? सो एक काइंड ऑफ इंटरवल विल बी 4 to 6, 5 minus 1 and 5 plus 1. This is an example of a confidence interval. ठीक है ना? तो अभी हमको ऐसा चाहिए कि the probability with which mu lies in this confidence interval x bar plus minus c, this should be equal to 0.95. अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस इंटरवल का वो फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको कि हम आंख बंद करके बेवकूफ जैसे लगाते रहते हैं हर जगह. ठीक है ना? क्या करेंगे हम? The probability that mu belongs in this interval, which means what? एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, which means कि x bar minus c should be less than mu and mu should be less than x bar plus c. This is what it means to belong in an interval. ठीक, अब हम चीजों को मूव अराउंड कर सकते हैं, हम x को इधर से उठा के इधर से उठा के इधर डाल सकते हैं, which means कि probability that minus c is less than mu minus x bar is less than plus c. And this probability, अभी तक हमने सारे चेंजेस इधर ही किए हैं, इधर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? फिर से हम साइन की हेरा फेरी करके we can say that this is the case. अब यहाँ पे CLT का असली पावर पता चलेगा. क्यों? ये कुछ जाना पे जाना सा लग रहा होगा,
नहीं लग रहा है तो मैं याद दिलाती हूँ. Remember that if you have any normal distribution, right? So if suppose some variable y follows the normal distribution with mu and sigma, then y minus mu upon sigma, right? This follows the standard normal distribution always. अब याद करो, CLT ने क्या कहा, x बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है ना. CLT said that x bar has a normal distribution जिसका मीन खुद म्यू है और दिस इज सिग्मा बाय रूट एन, है ना. सिग्मा स्क्वायर बाय एन का अंडर रूट लोगे तो सिग्मा बाय रूट एन आएगा. ठीक. सो इसका मतलब क्या है कि x बार माइनस x बार का मीन डिवाइडेड बाय x बार का स्टैंडर्ड डिविएशन, this will follow the Z distribution, standard normal. अब न्यूमरेटर हमको मिल गया है, न्यूमरेटर यहाँ रहा, बस डिनोमिनेटर चाहिए, तो डिनोमिनेटर ले आओ, राइट. डिनोमिनेटर लाने के लिए दोनों तरफ को सिग्मा बाय रूट एन से डिवाइड कर दो, और इधर किया है तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड भी करेंगे. Right? So let's continue this over here. This is saying what? That the probability that minus c upon sigma by root n, or rather the probability that a standard normal random variable lies between this interval is 95%. और ये तो हमको पता है ना, 68, 95, 99.7 रूल. हाँ, z वेरिएबल जो है, the probability that it lies within two standard deviations is 95%, is approximately equal to 95%. The actual value is 1.96. ठीक है. So मैंने ये 2 कहा था, but that is an approximate value. So if this is minus 1.96 and if this is 1.96, तो तब ये वाला एरिया exactly 0.95 होता है. ठीक है. 2 में थोड़ा सा हायर एरिया होता है, but that's a very small adjustment. All right. So then what you have is that this both of these numbers, है ना, मतलब इसका जो absolute value है, this has to equal 1.96. And we know this क्योंकि हमको z का पूरा distribution पता है. जो नंबर नहीं पता है वो भी हमें z टेबल से मिल जाता है, right? So then what we have is that we can simply equate that c upon sigma by root n should be equal to 1.96, which means that c should be equal to 1.96 into sigma by root n. And this is the formula that you keep on using, right? So this is what you have everywhere where you just build the confidence interval like this. X bar minus 1.96, right? Into sigma upon 210. This is your 95% confidence interval. जो भी C का वैल्यू आए यहाँ से, हाँ, तुम्हें सिग्मा पता हो, तुम्हें सिर्फ म्यू नहीं पता है. हाँ, ये उस assumption के साथ हम चल रहे हैं कि हमको सिर्फ म्यू नहीं पता है, सिग्मा भी पता है और सैंपल साइज पता है. So then you put your value of sigma, you put your value of sample size, multiply it by 1.96, you will have the value of C. X बार में से माइनस करो, X बार में प्लस करो, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, which by construction, right, will contain the true population mean with 95% probability. That is your confidence interval. ठीक. All right. So then interpretation हो गया, हमने interpretation से ही शुरू किया. Cool. Now, one thing is that 95 में कोई भी बहुत खास बात नहीं है. हमने 95 ऐसे ही चूज किया क्योंकि हम जनरली 5 के मल्टीपल्स चूज करते हैं, है ना. 95 इज अ गुड नंबर दैट वी वांट कि हम बस
5% टाइम गलत होना चाहते हैं, राइट? वी वांट टू से कि हम 95% टाइम्स दिस इंटरवल शुड कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन मीन, है ना? वी कैन चूज एनी अदर नंबर। तुम 90 ले लो, तुम 96 ले लो, तुम 98 ले लो, तुम 92.5 ले लो, you can choose any number. There's nothing sacrosanct about 95. It is just that it is out of convention और कुछ भी नहीं. So you take any value, that's your choice. Any value that you take, the critical value you can get from your Z table. क्योंकि तुमने कोई भी वैल्यू लिया है तो ये जो अंदर का एरिया है ये उस वैल्यू पे इक्वल होना चाहिए। सपोज 0.925, 92.5 तुमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया अगर, तो तुम Z टेबल पे जाओ, ये क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लो वहां से, अगेन पुट इट इन द फॉर्मूला, 1.96 की जगह ये वाले वैल्यूज डालोगे, फॉर्मूला आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। Cool? All right. Deriving and all, you've already done that. Now, large sample, blah, blah, blah. There's only one thing that I want to talk about more is the usual case where, मतलब अब हम अभी तक हमने क्या किया कि हमने one-sided also you can do, right? So far what we have done is we are saying कि हमको सिर्फ mu नहीं पता है, but sigma हमको पता है, which is a very very unrealistic assumption, है ना? सिग्मा पता है, स्टैंडर्ड डिविजन पता है हाइट्स का, बस मीन नहीं पता है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो जनरली हमको ना मीन पता होगा ना स्टैंडर्ड डिविजन पता होगा, तो तब जो एक्स बार, what do we know that if x bar minus mu upon sigma, है ना, ये z फॉलो करता है, or rather let us write it like this, that any random variable you subtract its mean and divide by its standard deviation, this will follow the standard normal. लेकिन अगर ये standard deviation नहीं है, standard deviation क्या है? एक खुद नंबर है, ये एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हें नहीं पता है तो तुम उसको खुद एस्टिमेट कर रहे होगे। इसका मतलब कि सिग्मा की जगह तुम्हारे पास सिग्मा हैट होगा जो खुद एक रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है ना? सो व्हेन यू हैव अ रैंडम वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर लाइक दिस, तो तब ये जो फॉर्मूला है ये z नहीं फॉलो करता है, ये t डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ऑलराइट? एंड दैट इज व्हाई यूजुअली वी यूज द t डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि z को फॉलो करने के लिए डिनोमिनेटर में भी एक कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर वो कांस्टेंट नहीं है, अगर वो एक एस्टिमेटर है ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सिग्मा हैट, तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है। इसीलिए हम टी टेबल पे जाते हैं ना कि जेड टेबल पे। लेकिन टी और जेड बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। इफ दिस इज योर जेड, राइट, देन दिस विल बी समथिंग योर टी, जिसके टेल्स थिकर होंगे। बट एज योर सैंपल साइज इंक्रीजेस, टी और जेड एक्चुअली मतलब टी converges to this z distribution, so there is virtually no difference. All right, this is what it is, and I guess we are done. We are done with interval estimation. Yeah, for this is fine, yeah. Okay, finally we have come to hypothesis testing. इसको I will explain very briefly, very intuitively. कोई भी इसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम कुछ भी नया नहीं करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल को ऐसा दूसरी तरफ जाके देखने की बात है। क्यों? पहले देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। कई बार ऐसा होगा कि हमको कोई इंटरवल नहीं चाहिए होगा, राइट? और rather the question is not framed in the sense that you give me a confidence interval. A lot of times the question will be framed in terms in things like whether or not this is true, right? Whether something that I am thinking, whether something that I am assuming, hypothesizing about the population, क्या वो सच है कि नहीं है, ठीक है ना? तो then we will be testing this kind of a thing. इसको बोलते हैं hypothesis testing, क्योंकि हमने कुछ hypothesis बनाया है about the truth in the population, और अब हम सैंपल को लेके उसको टेस्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हमारा सैंपल इस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में गवाह दे रहा है,
या इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है. This is how we reframe the question. So in this you must have seen जो basically null और alternate hypothesis है. तो null hypothesis क्या है? null hypothesis का जो नामकरण है वो कहाँ से आया पता है? वो आया है मेडिकल साइंस. ठीक. So usually in medical science we are often testing drugs, no? So what we are saying is कि भाई ये वाली particular medicine जो है वो effective है कि नहीं है. अब या तो इफेक्टिव है या तो नहीं है. एक ट्रुथ है. देयर इज सम एल्यूसिव ट्रुथ दैट इज देयर. बट हमारे पास टेस्ट करने के लिए तो सिर्फ सैंपल है ना. तो हम सैंपल के बेसिस पे देखेंगे दैट वेदर द सैंपल प्रोवाइड्स एनफ एविडेंस टू शो दैट द मेडिसिन इज एक्चुअली इफेक्टिव और देयर इज नो इफेक्ट. सो हमेशा ही जो नल था वो था बेसिकली द नल हाइपोथेसिस वाज अबाउट नल इफेक्ट्स. ठीक. सो एच नॉट जो नल हाइपोथेसिस है इट इज बेसिकली सेइंग के कोई इफेक्ट नहीं है. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इफेक्ट. बट ऑफ कोर्स यू कैन इट्स कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस. बट तुम कुछ भी कर सकते हो. सपोज तुमने कहा कि हमारे केस में तुम्हारा नल हाइपोथेसिस है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 5'5" है. And then the alternate is where you say के probably the null is not true. So let's see कि हमारा sample किसके लिए ज़्यादा convincing evidence देता है. ठीक. So then your alternative is कि नहीं 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 5'5" नहीं है. No? Or you can say that नहीं 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 5'5" से तो higher ही है. So then suppose you have a sample in which your x bar that you collected a sample, 400-500 बच्चों का, right, whatever. The x bar that you got was suppose 5, 6. Would you consider this as enough evidence against the null? Of course not. है ना. मतलब most likely no. You know that x bar is a random variable. You know कि उसमें variability होती है. तो लेकिन तुमको जो वैल्यू मिली है वो नल के बहुत ही क्लोज है. Right? This is not enough evidence to reject the null hypothesis. Enough नहीं है ये. Right? So then you do not reject the null. हाँ. Suppose यहाँ से तुमने शुरू किया 5, 6. दूसरा भी तुम सैंपल अगर तुमने alternatively if the other sample that you got the value was for example 5, 8. Still not enough. है ना. 5, 8 भी काफी करीब ही है 5, 5 के. इतना भी enough नहीं है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन. ये वैल्यू. Suppose the other x bar that you got was 5, 10. अब थोड़ा थोड़ा नल पे से विश्वास उठ रहा है ना. 5, 5 मीन है बट 5, 10 तो अच्छा हाइट है ना. राइट. Because we are including both girls and boys and we know that Indians are usually shorter and Indian women are actually much shorter than the international average, right? Not much shorter but much like shorter as compared to men. Okay, so then 5, 10 का average मिल रहा है. शक हो रहा है इस पे. अब सपोज x बार जो है वो 6, 1 आ जाए फिर इसे रिजेक्ट कर दोगे. अब तुम्हें एनफ एविडेंस मिल गया है. यू हैव एनफ कॉन्फिडेंस कि नहीं इतना अगर मेरे सैंपल में 6, 1 मतलब मैंने एकदम ही पे लंबे लंबे ही लोग उठाए क्या. 6, 1 वाला मिल गया मेरे को मीन विच मीन्स दैट पीपल इन माय सैंपल आर आल्सो टॉलर देन 6, 1 राइट. तभी ना मीन 6, 1 आया है. तो तब तुम्हें फिर इस पर भरोसा नहीं है. अब 5, 6 से 6, 11 तक के सफर में यहां तक चल रहे थे तुम्हारा H0 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 हो रहा था. यहां पे आके तुमने कहा नहीं अब H1 अब H ऑल्टरनेट. तो यहां से यहां तक में कहीं तो एक कट ऑफ आया होगा जहां पे तुम स्विच कर गए होगे. राइट.
हो सकता है 6.1 ही वो स्विचिंग पॉइंट हो, बट सपोज कि 6.1 तो बहुत ज्यादा हाइट हो गई, है ना, एवरेज हाइट। कहीं ना कहीं एक तुम्हारा आया होगा कट ऑफ जहां पे तुमने सोचा कि नहीं अब तो नल पे भरोसा नहीं होना है, राइट? दिस इज योर डिसीजन पॉइंट। इफ योर एक्स बार, राइट, अगर तुम्हारा ट्रू मीन 5.5 है और तुम्हारा एक्स बार एक तुम्हारा जो डिसीजन पॉइंट है उसके बियॉन्ड चला जाता है, तो तुमको फिर ये भरोसा नहीं होता कि इसका मीन 5.5 है, देन यू स्टार्ट डाउटिंग इट। तुम्हें लगता है कि नहीं, फिर मीन लगता है हायर होगा ना, क्योंकि अगर मीन 5.5 है तो ये वाले पॉइंट्स आने का तो चांस बहुत कम है। You know the distribution of the population, right? You know the distribution of the sample mean. तो sample mean का distribution तो और ही concentrated है around the population mean। तो इतना high value कैसे आ रहा है ना? So that is where you decide to reject the null। और ये ही decision point ढूंढना hypothesis testing का काम है। Okay, right? Now this is where you said that it is higher। अगर तुम इस टाइप का हाइपोथेसिस देख रहे हो तो तुम दोनों साइड पे रिजेक्ट करोगे, है ना? सो इफ यू गेट अ हाइट दैट इज टू स्मॉल, 4 6 मिल जाए अगर, फिर भी कहोगे कि 4 6 मिल रहा है, कहाँ से 5 6 होगा, है ना? तो बहुत छोटी, बहुत बड़ी, दोनों मीन वैल्यूज को रिजेक्ट, दोनों मीन वैल्यूज आएंगे तो नल को रिजेक्ट करोगे, तो अपने प्री कंसीव नोशन को रिजेक्ट करोगे। Cool? Okay. So now let us see how this relates to your confidence interval। क्यों? अभी हमने क्या कहा कि अगर 5.5 है ना, और हम कह रहे हैं कि अगर जो है 6.1 आ जाए तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल को, है ना, देन वी विल नो लॉन्गर बिलीव इन द नल। बट दिस रिजेक्शन इज ऑल्सो नॉट 100%। इसमें 100% कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि 5.5 के साथ भी मान लो कुछ ऐसा सैम्पलिंग एरर हो जाए, 6.1 आ तो सकता है ना, इसका प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, बहुत कम है, बट जीरो नहीं है। There is still a possibility that when you rejected the null over here, the null was actually true। Type 1 error, reject a true null। हम्म? ये हम नहीं चाहते हैं, है ना? आइडियली तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल ही ना हो ऐसा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि हम करेंगे टाइप 2 एरर। You do not reject a null, right, which is actually false। तो हम बिल्कुल ही मतलब कितना भी वैल्यू आया जा रहा है हम नल को रिजेक्ट ही नहीं किए कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमको कोई भी, हमको बैलेंस ढूंढना है ना? यूजुअली इस पे फोकस किया जाता है और उसके बाद इसको मिनिमाइज किया जाता है। सो most of the conventional analysis just focuses on this, right? So we will also focus on this। What we have is we want to reduce type 1 error। we want to reduce the probability कि जब हम नल को रिजेक्ट करें, हम्म, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज सिर्फ 5%, नल को रिजेक्ट करें और गलत रिजेक्ट करते हैं हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक is only 5%। Suppose we want to say, suppose we want that the probability of mistake, which is of type 1 kind, is 5%, right? Which means what? के ये जो भी क्रिटिकल वैल्यूज है ना, यहाँ पे जब वैल्यूज आएंगी, हम्म, तब हम नल को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर नल ट्रू है तो यहाँ पे भी वैल्यूज आ ही सकती हैं। हम्म, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिजेक्शन वाला एरिया है इसको हम 5% लिमिट कर देते हैं। What we are saying is that the probability that let's put it this way। तो when are we going to make a mistake? We are going to make a mistake when हमारा जो ये हो गया म्यू,
और वी रिजेक्ट व्हेन x बार जो हमें सैंपल से मिला है that lies in this rejection region, है ना, ये जो पर्पल शेडेड रीजन है इसमें x बार रहेगा, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे so high और so low. So then what we want is that the probability that x bar is x bar, you know, belongs in the rejection region, right, that should be less than 5%. क्योंकि हमको सिर्फ 5% गलती करनी है. मतलब कि ट्रू null है based on the assumption that the null is true. What we have is if we have x bar that is greater than these values, क्योंकि ये critical values हैं, इनका total area ये सिर्फ 5% है. जब हमें इतने बड़े x bars मिल जाएं या इतने छोटे value of x bar मिले, so that ये दोनों tails का probability सिर्फ 5%, which means के इतना बड़ा x बार मिला तो है, तो जब इतना बड़ा x बार मिल जाएगा, जब 6 1 मिल जाएगा, तो हम नल रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन गलती होने के चांसेस सिर्फ इतने रहेंगे. क्यों? क्योंकि अगर 5 5 ट्रू मीन है, तो 6 1 आने का प्रोबेबिलिटी, 6 1 या 6 1 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, राइट. सो सिर्फ इतना है और इस साइड में इतना है, सो दोनों मिला के 5%, 0.025 इधर, 0.025 इधर, right? So we are saying that when we get a very large number like 6 1 and 6 2, we will reject the null. Cool. Now this obviously makes sense, but not with 100% confidence. So we want a value so large कि गलती कब होगी, जब एक्चुअल में मीन इतना है और हमने कोई इधर वाली वैल्यू पे रिजेक्ट कर दिया नल को, तो इधर जो वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज हैं कंबाइंड, वो सिर्फ 5% पे रखते हैं, राइट. द प्रोबेबिलिटी दैट x बार बिलोंग्स टू द रिजेक्शन रीजन is only 0.05. Which is the same as the probability that, you know, the z variable जो है हमारा, क्योंकि x बार को हम कन्वर्ट तो z में ही करेंगे, तो z वेरिएबल बिलोंग्स टू द रिजेक्शन रीजन, राइट, इज 0.05. तो z क्या है, x बार माइनस म्यू अपॉन अगेन सिग्मा बाय रूट n. Which is another way of saying what, ये रिजेक्शन रीजन कहां से मिल जाएगा, फिर से वही क्रिटिकल वैल्यूज होंगे. इसका क्या मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दिस z, right, does not belong to the rejection region is greater than, less than की जगह equal to कर लो तो it will be easier to understand. So this is equal to 0.95. And if something does not belong to the rejection region, it basically belongs to the acceptance region. मतलब प्रोबेबिलिटी की z इस एरिया में लाई करे, दिस इज 0.95, और इसका तो हमें फिर से पता है -1.96, 1.96, है ना. तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए, z का तुम्हें पता है, सो x बार माइनस c अपॉन सिग्मा बाय रूट n, राइट. So this will give you the value of x bar, which will, so this has to be equal to 1.96. All right. Or again, this is giving you the same answer. ये basically x bar के अराउंड एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, और उसका लॉजिक भी वही है. सपोज तुमने x बार के अराउंड एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड कर दिया, there is 95% probability that this will contain the true mean.
इसका मतलब कि अगर तो तुम्हारा x बार 6 1 है और इसके अराउंड जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसमें ट्रू मीन होने के चांसेस 95% है, लेकिन गलत होने के चांसेस 5% है। वो 5% है जहां पर ट्रू मीन एक्चुअली 5 होगा। So when you create an confidence interval around the mean, you have actually reduced the probability of falsely rejecting a null to 5%. क्यों? क्योंकि बाकी 95% तो तुमने बनाया ही वो इंटरवल इसलिए है कि इट विल कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन मीन। सिर्फ 5% केसेस में यू कैन बी रॉन्ग, right? It will not contain the true population mean. It will be a very high or very low value, but it will still be possible to get that value. All right, it could be a sampling error, and that is why you got such a high value. Whereas the truth is still 5 but तुम्हारे confidence interval में वो value capture नहीं है, ठीक है ना? So ये confidence interval suppose 6 1 के अराउंड है, 5 8 से लेके suppose 6 5 तक। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में 5 तो आया नहीं, तो तुमने नल को रिजेक्ट कर दिया, राइट? बट कितनी बार गलती कर पाओगे? 5% बार, है ना? क्योंकि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था। तो बाय कंस्ट्रक्शन यू हैव लिमिटेड द टाइप 1 एरर का प्रोबेबिलिटी टू 5%। ऑलराइट, द अदर वे टू लुक एट इट इज दैट if you get a value of 611 and you reject the null hypothesis, you will be wrong 5% of the times. You will be falsely rejecting the null 5% of the times. Alright? तो यही hypothesis testing का देखने का मतलब confidence interval को देखने का दूसरा तरीका है। Alright, anything else that they have over here? Test procedures, rejection region. Alright, so test statistic. Rejection region ये है for which H naught will be rejected, right? Null hypothesis will then be rejected if and only if the observed or computed test statistic falls in the rejection region, which means बहुत high values हैं या तो बहुत low values हैं, बहुत दूर हैं mean के, which means कि उनकी आने की probability बहुत कम है, and that probability is limited to 5%, which is when you will be making a mistake. Type 1, type 2 error we have already talked about. Yeah. All right. So this is your test statistic, as I said, और इसके basis पे you will just check whether or not this Z value is above whatever is your threshold. अगर threshold 1.96 है, तो अगर Z value 1.96 से ऊपर जाती है, ठीक, तो तुम रिजेक्ट करोगे, नहीं जाती तो नहीं करोगे, है ना? Okay. And if you don't know the population standard deviation, then you will be using the T statistic. All right, so that brings us to the end. The only thing left is what is called a p-value. All right, so p-value discuss कर लेते हैं. So what is a p-value? इसमें हमने कहा कि if you build a 95% confidence interval or you reject any null hypothesis at 95% level confidence significance level, तो इसको हम क्या कहते हैं कि there is a 5% probability of us being wrong. Suppose कि this is your mu and this is your threshold, right? If you want to reject the null at 95% confidence interval, the height cutoff was 6 1. And if you wanted to reject it at 99% confidence interval, the height cutoff was 6 3. है ना? 6 3 तक अगर height आ जाती है तो तुम 99% श्योर हो कि null 2 नहीं है. फिर भी 1% probability है, but 99% you're sure. ठीक है ना? मान लो कि height आती है 6 2. अब what you can do is you can say that ये 6 2 पे क्या है? 6 2 पे है that you can reject H naught at the 95% level
मतलब at 5% significance level, and you do not reject H naught at 1% level. अब डिपेंड करता है कि तुम रिपोर्ट क्या करना चाहते हो. मान लो कि तुम रिपोर्ट करना चाहते हो कि इंडियंस आर शॉर्ट, right? So then you will say that, oh no, I don't reject the null hypothesis. It's not significant at 1% level. But if you want to say that Indians are tall, Baba, so then you will say that yes, I have 6'1" height, 6'2" height. I am an average. I reject the null at 5% confidence interval, 5% significance level. यहाँ पे ambiguity आ गई. तुम रिपोर्ट कर सकते हो जो भी टाइप का रिजल्ट तुम प्रेजेंट करना चाहते हो. So to avoid doing that, now it has become practice, मतलब कि conventional practice हो गया है. Instead of specifying your significance level beforehand, कि मेरे को 5% पे करूँ कि 1 पे करूँ, तुम actually ये बताओ कि अगर तो null true होता, अगर सच में mu 5 है, तो 6'2" और उससे हायर एवरेज हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विच इज दिस रीजन. सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है, which means that basically if you get 6'2", you will be able to reject the null at 3% significance, है ना, at 3% significance level. Only 3% of the times you will be wrong in rejecting the null, क्योंकि 6'3" से ऊपर हाइट आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3% है. ठीक. So instead of going into this ambiguity and going into this discretion of the researcher कि वो क्या रिपोर्ट करेंगे, तुम ऐसा रिपोर्ट करो कि लोग ही जज करें. यू डोंट से कि मेरा रिजल्ट 5% पे कि 1% पे सिग्निफिकेंस है. तुम मेरे को एक्चुअल सिग्निफिकेंस बताओ, एक्चुअल लेवल बताओ, which is the minimum level at which the null will be rejected, and that is 3%. Okay, so 5% पे रिजेक्ट होगा, 4 पे होगा, 3 पे होगा, 2 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा डेफिनेटली, 3 लास्ट है. 3 एक्चुअल रिजेक्शन, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की. दिस इज योर पी वैल्यू. So p value is, मतलब the purpose is to get past, or to make sure that any researcher is not utilizing or is not misusing this sort of a convention. गलती होने के चांसेस यहाँ भी हैं, बट कितने हैं? 3%. Alright. Okay, so that is it for today. I know it was a longish lecture, but we have finished everything, and I hope all the concepts are clear now. Your inference, basically estimation, and then your inference. So let's stop here. In the next class, we will continue with, we will actually start with regression. All right. So I hope everything was clear now, and let's get started with regression in the next class. Happy learning. Bye.